करिष्यामि। भवतु मे बुद्धिर्भवतु सदा। मे सदा। भवतु मे। बुद्धिर्भवतु मे सदा। नमो नमः। नमो नमः। तो अस्माभिः त प्रत्यय, तवतु प्रत्यय, ल्यप् प्रत्यय, तुमुन् प्रत्यय, शत्रु प्रत्ययः, शानच् प्रत्ययः इत्यादीनां विस्तरेण अभ्यासो कृतः। अधुना किञ्चित् तादृशमेव अभ्यासकार्यम् अग्रे वयं सारयामः। अग्रिमः पाठः वर्तते पञ्चविंशतितमः पाठः। रैट्, एतत् दर्शयामि। अस्मिन् पाठे भवद्भिः किं कर्तव्यं? तत्र पञ्चविंशति नाउन्स् एण्डिङ्ग्स् इन् कान्सोनन्ट्स्। अधुना व्यञ्जनान्तशब्दाः आरभन्ते इतः आरभ्य इति धिया तत्र रामः, रामौ, रामः, रामः, हरिः, गुरुः, रमा, उमा इत्यादि शब्दाः, नदी इत्यादयः शब्दाः अकारान्ताः, आकारान्ताः नाम स्वरान्ताः आसन्। तेषाम् अन्तः स्वरेण भवति स्म। किन्तु इतः परं ये वर्णाः, ये शब्दाः आयान्ति तेषाम् अन्तः वर्णेन नाम व्यञ्जनेन भवति इति कृत्वा ते व्यञ्जनान्तशब्दाः इति उच्यन्ते। ते तु समेऽपि सरलाः इति धिया भवन्तः यथा यथा शब्दः आयान्ति तथा तथा तेषाम् अभ्यासं कुर्वन्तु इति। प्रथमः शब्दः टकारान्तः शब्दः प्रदत्तः, यथा मरुत् शब्दः। मरुत्, मरुतौ, मरुतः, मरुतं, मरुतौ, मरुतः, मरुता, मरुद्भ्यां, मरुद्भिः, मरुते, मरुद्भ्यां, मरुद्भ्यः, मरुतः, मरुद्भ्यां, मरुद्भ्यः, मरुतः, मरुतोः, मरुतां, मरुति, मरुतोः, मरुत्सु। एवमेव किमपि भवन्तः चालयितुं। This Marut Sabda is equal like Bhagavat. कैण्ड् आफ् भगवत् तत्र प्रथमविभक्ति बहु एकवचनं तत्र भगवान् इति भवति। अत्र तु मरुत् इत्येव भवति। तत्र नका भगवान् इत्यत्र न वर्तते खलु, भगवान् इति मूलरूपं। भगवत् इति रूपं तत्र नकारोऽपि आयाति। अत्र मरुतौ इति न भवति, मरुतौ। किञ्चित् सिमिलर् किन्तु किञ्चित् भिन्नमपि। तृतीया आरभ्य तत्र समानमेव, प्रथमा द्वितीया किञ्चित् भिद्यते। अस्तु, तद्वदेव वाच शब्द आयाति। अयं वाच शब्द फेमिनैन् मध्ये वर्तते। वाक्, वाचौ, वाचः, वाचं, वाचो, वाचः, वाचा, वाग्भ्यां, वाग्भिः, वाचे, वाग्भ्यां, वाग्भ्यः, वाचः, वाग्भ्यां, वाग्भ्यः, वाचः, वाचां, वाचः, वाचोः, वाचां, वाची, वाचोः, वाक्षु। हे वाक्, हे वाचौ, हे वाचः। एवं तत्र चकारान्त शब्दः अपि करणीयः। भगवान् शब्द अत्र भगवत् शब्द दीयते। भगवान्, भगवन्तो, भगवन्तः, भगवन्तं, भगवन्तौ, भगवतः, भगवता, भगवद्भ्यां, भगवद्भिः, भगवते, भगवद्भ्यां, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवद्भ्यां, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवतोः, भगवतां, भगवति, भगवतोः, भगवत्सु। हे भगवन्, हे भगवन्तौ, हे भगवन्तः इति। यदि भवन्तः भगवन्तं शब्दं चालयितुं पारयन्ति तदा शत्रुप्रत्ययस्य रूपमपि चालयितुं शक्यते। कथं? गच्छन् इति तत्र शत्रुप्रत्ययो भवति चेत् गच्छन्, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तं, गच्छन्तो, गच्छन्तः, गच्छता, गच्छद्भ्यां, गच्छद्भिः, गच्छति, गच्छद्भ्यां, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छद्भ्यां, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छतोः, गच्छतां, गच्छति, गच्छतोः, गच्छत्सु। एवं शत्रुप्रत्ययः शक्यते। So let's go through the rules. So basically, the general scheme of case ending given in Sanskrit grammar is as follows. So basically, sa, au, as, ausha, as, abhyam, bis, ebhyam, vyas, as, os, asbhyam, vyas, as, os, I, osu. These are the pratyayas. Subanta pratyay, these are called. These pratyayas will be added to the word. So like राम में यदि किसी भी
शब्द के अंत में ये रखेंगे तो आपको अल्टीमेट फॉर्म मिल जाएंगे, राम रामो रामाः, हरि हरि हरयः वगैरह वगैरह। तो उनमें चेंजेस होते रहते हैं, तो डोंट गो इन डिटेल्स, जस्ट ट्राई टू मेमोराइज द वर्ड्स, that would be the sufficient. These terminations are applied without any change to the masculine and the feminine nouns ending in consonants, but the crude form itself undergoes certain modifications, which we will see shortly. Notice. So basically, these pratyas will be directly added to the pullinga nouns like a takaranta any noun, halanta any word. For example, bhagavat, that first wala वो छोड़ दो, बाकी का सारा एप्लीकेबल होगा। जैसे कि भगवत, उसके साथ औ जोड़ देंगे तो भगवतौ, बहुवचनम भगवतः, भगवंतम सॉरी, मरुतम मरुतौ, मरुतः मरुता, मरुद्भ्यां मरुद्भिः, मरुते मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः, मरुतः मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः, मरुतः मरुतोः मरुतां, मरुति मरुतोः मरुत्सु, एवं सर्वमपि शक्यते। इवन स्त्रीलिंग यथा वाच, वाचः वाचौ, वाचः, वाचं वाचौ वाचः, वाचा वाग्भ्यां वाग्भिः, वाचे वाग्भ्यां वाग्भ्यः, वाचः वाग्भ्यां वाग्भ्यः, वाचः वाचोः वाचां, वाची वाचोः वाक्षु। पश्यन्तु, द्वितीयाम् आरभ्य भवन्तः सर्वमपि एतेभ्यः साधयितुं शक्नुवन्ति। एतस्मात् कारणात् व्यञ्जनान्तशब्दाः सरलाः इति मन्यन्ते। प्रथमा विभक्तिं किंचित प्रथमा विभक्ति मध्ये किंचित तत्र क्लेशः, किंतु द्वितीयाम् आरभ्य सप्तमी पर्यन्तं तु साक्षात् प्रत्यययोजनम् एव तत्र वर्तते। There are numbers of nouns which undergo no change and are declined alike, whether masculine or feminine, like a bhuvrut, marut, drushat. These are though gender is changed, since declension will be the same. Okay, next. Nouns ending in vat or mat, like a bhagavan, vidyavan, buddhiman, will be declined like bhagavan only. Okay. Present participles differ from the only in the nominative singular. So basically, shatru pratyay only will differ in prathama vibhakti. That's it. Otherwise, the rest of the part will be same like a bhagavan. The termination of the nominative, vocative and the accusative forms of neuter nouns ending in the consonant are those like this one. Nan, e, for example, jagat, jagati, jaganti. So, prathama, dvitiya and sambodhan will be the same. And rest of the part, dvitiya up to saptami, sorry, tritiya up to saptami, it will be like a jagata, jagadbhyam, jagadbihi, jagate, jagadbhyam, jagadbhyah, jagatah, jagadbhyam, jagadbhyah, jagatah, jagatoh, jagatam, jagati, jagatoh, jagatsu, like a bhagavat. So prathama dvitiya changes. Prathama dvitiya would be jagat, jagati, jaganti, jagat, jagati, jaganti. Similarly, all the forms like a neuter gender में गच्छत शब्द चलाना है तो गच्छत, गच्छन्ति, गच्छन्ति, गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति, गच्छन्ति इति। Similarly, विशत, विशन्ति, विशन्ति इति। अधुना भवन्तः किं कुर्मः? अत्र अस्मिन् पाठे फेमिनैन् जेंडर, मस्कुलिन् जेंडर तथा न्यूटर जेंडर सर्वं मिक्स प्रदत्तं वर्तते। तस्य किं कुर्मः? अभ्यासकरणवेलायां फेमिनैन् 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 सेपरेट चार्ट, मस्कुलिन् 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 सेपरेट चार्ट, न्यूटर 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 सेपरेट चार्ट, and keep one like a Strilinga Shabda in front of you, and accordingly you will be able to decline the other rest of the words. Similarly, one major word you pick up, then rest of the masculine will go like that. One neuter gender like Jagat Shabda, if you take up, the all other neuter will go like a Jagat. Okay. So Apad is a feminine. Apad, Apadau, Apadah. आपदम आपदौ आपदः, आपदा आपद्भ्याम आपद्भिः, आपदे आपदः, आपद्भ्याम आपद्भ्यः, आपदः आपद्भ्याम आपद्भ्यः, आपदः आपदोः आपदाम, आपदि आपदोः आपत्सु. So birds
if you memorize apat shabda, so whatever words comes in feminine ending with takara, you will be able to decline those. Okay, so let's see, we will see these kind of words, feminine words also, like a drishat shabda, stone, is feminine. Pratipad, pratipaddau, pratipadah, pratipadam, pratipadau, pratipadah, pratipada, that is also feminine. Again, what is feminine? संपद Good शब्द is feminine. आपत तो है ही, वो तो पहला हमने देखा. उसके बाद मृत शब्द फेमिनाइन में है, वाच शब्द फेमिनाइन में है, हाँ, विपत शब्द फेमिनाइन में है, शरत शब्द फेमिनाइन, संपद. These are some feminine you can separate from the list. Then comes some adjectives which will be declined in all three genders, like Ayushman. वाच in वाच ch is turned into ka वाच हाँ, or in वाच is different. Vacha is same, it becomes ka in Prathama Vibhakti Ekvachan. Okay, okay. Actually, ka also and ga also. Vak, vag, vacha, vacha. Then rest of the part, it will have chakar. Okay. And also, whenever there is a Visheshana, again the three kinds of declension there would be Ayushman iti Pullinga, Ayushmati Nadivat Strilinga, and Ayushmat even neuter gender. Ayushmat, Ayushmati, Ayushmat, Jagat Jagati, Jaganti. Similarly, Ayushmat, Ayushmati, Ayushmanti. So whenever there is adjective, mainly you can focus on Pullinga and Strilinga. That would be sufficient. Gunavan, Gunavati, right? Jagat Shabda your declension would be Jagat Jagati Jaganti. Dhiman is the avyaya pullinge dhiman dhimanto dhimantah. Strilinge dhimati dhimatyau dhimatyah, like a nadi. Ikara you need to add, that's it. Can you explain again the adjective dhimat? हाँ, so dhiman, the dhimat shabda will be declined like a Bhagavan, pullinge. Okay? भगवान ये जैसा Okay, got it. है तो वैसा धीमान. उसी धीमान का स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करते हैं, इकार, दीर्घ इकार जोड़ देना है उसको. तो जैसे कि भगवती, भगवत्यौ, भगवत्यः, वैसे नदी, नद्यों की तरह धीमती, Dhimati is followed like a nadi, right? शब्द. क्योंकि उसमें दीर्घ इकार आ जाएगा. ओके. और न्यूटर में करना है तो जगत जगती, जगंती, धीमत धीमती, धीमंती ऐसा बनेगा, क्योंकि ज्यादा न्यूटर के नहीं बना पाएंगे. ज्यादा फोकस हम इसके ऊपर करेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. वैसे ही प्रतिपद शब्द केवल फेमिनाइन में है तो प्रतिपद, प्रतिपदौ, प्रतिपदः, ये दकारांत तकारांत शब्द है तो उसका आपद प्रतिपद, आपद का आप मेमोराइज कर लीजिएगा. उसके जैसा प्रतिपद भी बनेगा, दृशद, दृशद भी बनेगा. दृशद मतलब स्टोन. ओके. भवत शब्द ये प्रोनाउन है, भवान, भवन्तौ, भवन्तः. उसका स्त्रीलिंग बनाना है तो हम बनाते हैं भवती, भवत्यौ, भवत्यः, है ना. योर ऑनर basically, मतलब you, भवान you, भवती you, like that. Bhuvrit is the word. The declension will go bhuvrit, bhuvrutau, bhuvrutah, bhuvritam, bhuvrutau, bhuvrutah, bhuvruta, bhuvrutbhyam, bhuvrutbhi, bhuvrute, bhuvrutbhyam, bhuvrutbhyah, bhuvrutah, bhuvruta, bhuvrutbhyam, bhuvrutbhyah, bhuvrutah, bhuvrutoh, bhuvrutam, bhuvruti, bhuvrutoh, bhuvrutsu, हे भूभृत, हे भूभृतौ, हे भूभृतः एवं. अकिंग. Similarly, marut शब्द also, मरुत, मरुतौ, मरुतः. Adjective is there. So adjective का क्या बनाना है, मूर्तिमान, भगवान की तरह चलेगा, मूर्तिमान. हाँ, स्त्रीलिंग में बनाना है तो दीर्घ इकार जोड़ दो, मूर्तिमती, मूर्तिमत्यौ, मूर्तिमत्यः. उसके बाद
न्यूटर में जरूरत है तो चला पाएंगे जगत की तरह। मृत शब्द है, मृत, मृदौ, मृदः, ये अर्थ फेमिनाइन है, तो आपद शब्द की तरह चलेगा। यशस्वान, ये एडजेक्टिव है, पुल्लिंग में भगवत की तरह, स्त्रीलिंग में इकार जोड़ देंगे, यशस्वती, है ना। तो Yeah. यशस्वत, यशस्वत्यौ, यश। So next time or whenever I will get the chance, I will separate the neuter, feminine, and all those three genders, and then I will make the padas like vibhaktis, and I will send it to you. What you can do is just take a आपत शब्द, भगवत शब्द and jagat shabd, right upon, above part you can write these 7 vibhaktis, these words in 7 vibhaktis, and उनके नीचे पुल्लिंग के ये शब्द आते हैं, उनकी जस्ट लिस्ट लिखनी है, वो सारी डिक्लेरेशन करके, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना, तो उसके जैसे। But like if I will not do couple of more padas, then it will be hard for remember if I will make only one pada. That is fine. If time allows, then it's okay. Otherwise, you have to just try to pronounce that way. Chanting is sufficient rather than writing. Okay. यशस्वान पुल्लिंग, यशस्वती स्त्रीलिंग, वाच शब्द फेमिनाइन है तो वाच, वाचो, वाचः, डिक्लेरेशन इज गिवन। विद्युत शब्द न्यूटर में है, न्यूटर में है तो कैसे चलेगा, जगत जगति जगन्ति, जगत जगति जगन्ति, विद्युत विद्युन्ति, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू गो। ओके, जगत जगन्ति, विद्युत शब्द फेमिनाइन में आएगा ना, विद्युत की, जस्ट अ मिनट, आई विल सी विद्युत शब्द वंस। विद्युत शब्द न्यूटर में दिया है, विद्युत शब्द स्त्रीलिंग है जी, इन्होंने गलत दिया। विद्युत शब्द कैसे चलेगा, तो आपद शब्द की तरह चलाना, विद्युत, विद्युतौ, विद्युतः, ऐसा चलेगा, आपद आपदौ आपदः, सिमिलरली विद्युत। सिमिलरली विपद शब्द also, विपद विपदौ विपदः इति। विद्युत इत्यस्य लाइटनिंग इति अर्थः खलु। नेक्स्ट, वियत शब्द, वियत शब्द विल गो लाइक जगत शब्द, जगत जगति जगन्ति, वियत वियति वियन्ति, द स्काई। शरद, शरद इत्यस्य ऑटम, ऑटम सीजन, सो जगत, शरद शब्द विल गो लाइक शरद शरदी, शरद शरदौ शरदः, जीवेत शरदशतम् इति वदन्ति खलु, सो फेमिनाइन में है शरदः इति। श्रीमत शब्द, इट इज एन एडजेक्टिव, सो श्रीमान श्रीमंतो श्रीमंतः पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे इकारः योजनीयः, श्रीमती श्रीमत्यौ श्रीमत्यः इति। संपद शब्द फेमिनाइन आपद शब्द की तरह चलाना है, संपद संपदौ संपदः। सुखभाज शब्द इज देयर एडजेक्टिव, सुखभाज सुखभाज इति शब्दः, सुखभाजौ सुखभाजः इति पुल्लिंगे। सुहृद, सुहृदौ सुहृदः मस्कुलाइन, सिंपल है, हुतभुज सिंपल है, so these were few things. Then again स्वरांत शब्दाः, अकालः not the time, not a proper time, so improper time basically. अत्ययः, अत्यय means what, passing away, destruction is called अत्ययः। हिमस्य अत्ययः, so hima is passing, so now the season, hima season is past, it will be called as हिमात्ययः। अधर्मणः, अधर्मणः
sorry, adhamaranam is what? Runam, which is adhamaruna. So basically, डिबेटर, अधमरण, जिन्होंने लोन लिया है, हाँ, वो। अंतःकरणम इज हार्ट। देन अभ्यर्थयति अथवा ये आत्मनिपद में है तो क्या बनेगा? अभ्यर्थयते, टू बेग, टू रिक्वेस्ट, टू सॉलिसिट। इह, हियर। उपेक्षते, उपेक्षते, टू निग्लेक्ट। ओके। उच्चैः, aloft, nobly. Uchchai means sounding loud, is called aloft. Udbhavah, udbhavah, birth. Uddhatah, uddhatah means proud of. Uddhatah. Kartikah, name of the month. Ramah Tarka. Adjective, chanchalah, transitory. Chanchalah means what? One who is very chanchala is called चंचलः, पुल्लिंगे चंचला, चंचलम, तीनों लिंगों में चलेगा। जीवितम, जीवितम लाइफ। नलः, नेम ऑफ अ किंग। निषन्नः, निषन्नः सीटेड, सीटिंग। प्रवृत्तिः, प्रिडिलेक्शन, नेचर। प्राणः, लाइफ। बहुशः, बहुशः, बहुशः मतलब ऑफन, इन मेनी केसेस। महोत्सवः, फेस्टिवल। मृदुः, a soft, it is an adjective. वासुदेवः, name of the god Krishna. विकारः, change of forms, transformation. विद्यते, to be. विहितः, laid down. वृन्तः, वृन्ता means stalk. Then comes adjective shlatha. Shlatha means loosened. Okay, loosed. Sandehah, doubt. Sarvatha, it is an indeclinable avyaya. Holy. Hotru, hota, hotarau, hotarah. So sacrificial priest. Then comes Hotru is the word from the Veda, right? That is main root word, and declension would be hota, hotarau, hotara. One who performs yajna is called hota. Then comes shatru pratyaya like kurvat, gachat, chodayat, jayat, pashat, vasat, shasat, sat, as. So basic sat actually. So kurvan, kurvantau, kurvantah, kurvantam, kurvantau, kurvatah. This is how the shatru pratyay will be declined. Gachan, gacchantau, gacchantah, gachantam, gacchantau, gachatah, gachata, gachadvyam. This is how gachat shabda in shatru pratyay will be declined. Chodayat, chodayantau, chodayantah. Chodayan, chodayantau, chodayantah means going. Jayan, jayantau, jayantah. This is how the word will be declined. Pashan, pashyantau, pashyantah. वसन, वसंतौ, वसंतः। शासत, शासन्तौ, शासन्तः। सत, सतौ, सतः। This is how the declension will go. सन, सन्तौ, सन्तः, क्षम्यताम्. So now we'll try to make some sentences. नृशंसेभ्यः गुणवताम् अपि भयं विद्यते. Nृशंसेभ्यो means नृशंस शब्दस्य अर्थः कः? नृशंसः नाम दुष्टः. दुष्टेभ्यः गुणवताम् भयं भवति इति. there is fear. There is a fear From the wicked.
For good people, for good people, there is a fear from dushta people, nrushamsa people, So wicked. Wicked person. So there Oh, is wicked. Wicked. good people are also dushta lok. चंद्रस्य प्रकाशः शरदि आह्लादको भवति शरदि शरद ऋतुमध्ये चंद्रस्य प्रकाशः कीदृशः भवति The light of the moon in autumn Sharada is delight is joyful, delightful, right? In autumn the light of the moon is delightful. Season, the light of moon is delightful. Okay. In autumn is called Sharad. विद्युता सह मेघः वीयति वर्तते the sky वह the cloud विद्युता सह वीयति stays in the sky with the light, right? So मेघः, the cloud is along with lightning. Megha is there in the sky along with lightning. What's Ayushman Bhava. So, hey, like child, live long life. Yes. Oh dear, oh Vatsa, oh son, live long. धीमन्तः लोके यशस्वन्तो भवन्ति. The talented people become famous in the world. यशस्विनः कीर्तिवन्तः भवन्ति इति. रामः मूर्तिमान् धर्मः इव. So Ram is just like dharma. It's like a dharma. Ramo vigrahavan narha, says Vasishtha. Ramo vigrahavan, as though dharma has taken the form of Ram. Okay, next. Jayatah shatrun māsupekshasva. So you cannot ignore your enemies. But which kind of enemy? Jayatah. Who are winning, right? The winning enemies cannot be neglected. Do not neglect your enemies. Do not neglect your conquering enemies. Winning enemies. उपेक्षा की तो वो आगे जाकर के घात करते हैं, है ना. तो इनको बिल्कुल नहीं करना है. जब जहाँ जहाँ जरूरत है उस समय इनको समाप्त करना है. भवद्भिः आदिष्टः किंकरः नगरम् अगच्छत्. किंकरः नगरम् अगच्छत्. The servant went to the city or town. But which kind of by
by your command or listening your command? So the Kinkara, the servant, Hmm. went to the forest. तो किङ्करः नगरम् अगच्छत् कीदृशः किङ्करः भवद्भिः आदिष्टः the spoken the ordered by you the servant ordered by you went to the forest ऐसा बन सकता है Hmm. भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नमः Like a salute to the Vasudev Bhagavan. the son of Vasudeva भगवान वासुदेव भगवान श्री कृष्ण पश्यतः गुरोः शिष्येन अविनयः कृतः शिष्येन पश्यतः गुरोः अविनयः कृतः शत्रुपत्रि का सब जगह पे यूज हो रहा है अब Mhm. तो अविनयः कृतः Immodesty. शिष्येन अविनयः कृतः तो शिष्य Like the student that did immodesty to the preceptors. हाँ प्रिसेप्टर मतलब गुरु तो जब गुरु देख रहे थे Oh, so preceptor observing that the student, प्रिसेप्टर मतलब क्या the acharya, Acharya. So when Acharya was looking at Shishya, he did something bad. Though Guru was looking at him, still he did something immodest. what is the exact translation? पश्यतः गुरोः शिष्येन अविनयः कृतः the student did something bad while Guru was looking at him. So इसकी लैंग्वेज में यदि रखे तो क्या बनेगा while teacher was observing the student did something wrong. ओके ऐसा तो बेसिकली हिंदी में बताता हूँ मैं जब गुरु देख रहे थे देखते हुए गुरु के सामने शिष्य ने अभिनय किया अभी इंग्लिश में पुट करना जरा अजीब लगता है वो सेंटेंस बट मीनिंग इज दैट सुतभुजा दग्धम अरण्यम अपश्यत् नलः पश्यत् किं पश्यत् नलः दग्धम अरण्यम अपश्यत् केन दग्धम सुतभुजा अग्निना दग्धम अरण्यम नलः अपश्यत् Like a Nalaha sees this so that the forest is burned. The Nala Raja, the king Nala saw the forest burnt by the fire. So here it is akta pratyanta, dagdham, it's the pratyanta. Okay, Dineshu gachatsu Narayanah panditah bhavat. Like as the day gone or pass, the Narayan become a pandita. Dineshu gachatsu satsu sati saptami again to indicate time. So as days passed, Narayan became a pandita. Can we say after the decade, the Narayan will become decades, years will be decades मतलब 10 साल का एक decade होता है ना yes
तो ज्यादा दीर्घ हो जाएगा। As years passed, as the Okay. passed, Narayan, we became wise day by day, basically. Yep. शासति सति दशरथे भूभृति जनाः सुखभाजो अभवन्। बेसिकली दशरथे भूभृति दशरथी महिं शासति सति जनाः सुखभाजाः अभवन्। So people feel happy when Dasarath was ruled the kingdom. द्रष्टुम् इच्छति। भर्ता वायुः, वायुदेवता। So the actors become dependents everywhere. द्रष्टुम् इच्छति, द्रष्टुम् इच्छति, wants to see. Want Arjunam. So basically Marut is a big pie, right? So Marutam Bharta, so Vayu Devata Arjunam द्रष्टुम् इच्छति। तस्मात् अर्जुनं द्रष्टुम् इच्छति यतोहि अर्जुनः the Lord of the angel wants to see Arjun. वायु अर्जुन किसका पुत्र था? इंद्र का ना? ओके। Pardon? मतलब इंद्र देवता। I didn't hear you properly. Okay. So basically मरुतं भर्ता इत्यस्य अर्थः इंद्रः इति। इंद्रः अर्जुनं द्रष्टुम् इच्छति इति तात्पर्यम्। तस्मात् मरुतं भर्ता मतलब जो अष्टदिक्पाल का स्वामी है, कौन है? इंद्र है। इंद्र अर्जुन को देखने की इच्छा कर रहा है। इंद्र का पुत्र है ना अर्जुन, सूर्यपुत्र कर्ण, इंद्रपुत्र अर्जुन है। अर्जुन में इंद्र का अंश है। ओके। कविनां वाक्सु माधुर्यम् अस्ति। In the speech of the poets are very sweet. In the speech of poets there is a sweet, madhuryam, sweetness. Okay, here There is stop. I think madhuryam asti ityatra vayam पाठं स्थगयितुं शक्नुमः. You will take a time to go through the lesson, so you will have better idea. Shatru pratyaya, shanas pratyaya, and all these things are